back at it with a new video. So टाइटल देख के समझ ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं. सो अभी टाइम हो रहा है 4:45 एंड हमारी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करने वाली है 9:20 एंड आई हैव द प्रिविलेज ऑफ इंडियन पेरेंट्स. सो हम बहुत जल्दी निकल रहे हैं आई थिंक. बट ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ. आप देख सकते हो सबके बैग्स पैक हो चुके हैं, मेरा भी बैग पैक हो चुका है. आई जस्ट नीड टू हैव अ ब्रेकफास्ट एंड देन वी कैन लीव. सी यू गाइस. So I finished packing my bag. I mean, I'm almost done. I've taken my gloves and my beanie because it is 8 degrees in Ooty. Just a quick update. I'll be shooting using this so that you guys can get a better angle. All right. Guys, just look at the rush for the check-in. It's too much. Just hope we make it on time for the flight. We have to actually walk a lot to reach our boarding gate. तो रास्ता काफ़ी लंबा है, इसलिए नहाने के लिए व्हील चेयर ले लिया हम लोग ने रिक्वेस्ट करके. बिकॉज हमने बोर्डिंग गेट पे एक्चुअली टिकट बुक करने में वी हैव टू पुट एन ऑप्शन कि हमें व्हील चेयर लेना है. बट हमने डाला नहीं. बट स्टिल ऑन रिक्वेस्ट वी गॉट वन. सो गुड. गेट नंबर इज़ 47A एंड वी आर करेक्ट 47. मुंबई एयरपोर्ट तो अच्छा बना है. तो बेट मोर रहती है. हाँ, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए. नहीं 35 बोलने का मैं तो नहीं लेंगे हम लोग. चलो तुमको बिठा देंगे अगर हम लोग 5 दिन के अंदर आएंगे. 35 क्यों बोलने का? अच्छा 35 क्यों बोलने 35 क्यों बोलने का बोल दिया आपको. 35 क्या? 35 नानी की उम्र क्यों बोलने हैं चेक इन पे बोलो. टिकट के पीछे उनको आके पूछे तुम्हारी उम्र कितनी, तुम कितना बोलोगे? 73. नहीं नानी 35 बोलना है. 35 बोलने का? हाँ, हमने बोले तुम्हारी उम्र 35 है इसलिए. 35 है मेरी उम्र. हाँ तो क्या बोलोगे तुम? 35 है. वरना तुमको प्लेन में नहीं बिठाएंगे, बोलेंगे घर जाओ. अच्छा, ये क्यों? ऐसा ही होता है. 35 यहाँ पे भी लाइन एंड दिस इज द फ्लाइट. यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन है. पर चलो मेड इट ऑन टाइम. नानी डर लग रहा है? बताओ, डर लग रहा है? नहीं ठीक है. सो वी हैव अराइव्ड बैंगलोर एयरपोर्ट एंड आई थिंक या वी हैव टू वॉक बिट नाउ. ओके सो अब हम जा रहे हैं हमारा बैगेज कलेक्ट करने के लिए. एंड वहाँ से ऑलमोस्ट 6 आवर्स का ड्राइव है टू ऊटी. So we reached our hotel, the Suya village. I couldn't shoot much. It's very cold over here, almost around 10 degrees and बहुत बारिश हो रहा है. So इसलिए शूट नहीं कर पाया मैं. And we had like a hill climb of almost कुछ से 4 to 5 hours. इसलिए अभी I'll just check in my rooms and then tell you the plan for tomorrow. So this is the room and this is me. Room is quite good but it's very cold. This is me again. Okay, so I'll just fresh up, wash my face, wear some warm clothes and I'll be right back. And मैंने ये part देखा ही नहीं. This is the balcony. तो अब यहाँ से तो इट्स नाइट टाइम तो आपको कुछ व्यू दिख नहीं रहा होगा. सो टुमारो. हाँ मम्मी. हाय मम्मी. हाय पापा. यस दे आर हियर. माय वार्म क्लोथ्स. सो देयर इज अ बैड न्यूज़. एक्चुअली मैंने अपना नाइट सूट का टी शर्ट लाना भूल गया. लाइक आई वेयर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टी शर्ट and that is the only reason why I get a comfortable sleep. तो मैं वो लाना भूल गया हूँ. So apparently I'll have to wear one of my sweatshirt and sleep.
चलो कोई नहीं, अब वी आर गोइंग टू हैव डिनर। उसके बाद में हमें कल सुबह में 7 बजे उठना है। 7 बजे उठने के बाद में वी विल हैव टू गो टू दोरबेडेटा पीक। ओके हाँ, उसके बाद में वी हैव बुक टिकट्स फॉर दिस नीलगिरी टॉय ट्रेन। तो वो होगी ऊटी से कुन्नूर तक। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ 1 hour ट्रेन ट्रैवल। सो वहाँ पे ना साइट सीइंग के लिए वो बहुत अच्छा होता है। एंड उसके बाद में वी हैव टू गो टू ऊटी लेक एंड हाँ, आई थिंक उतना ही है कल के लिए। सो या दैट इज़ द अपडेट फॉर टुमारो। सो सी यू गाइस देन। गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning guys, and this was the view I was talking about last night. Just look at this view, कितना प्यारा लग रहा है ये ऊटी है। ये छोटी सी सिटी है ऊटी एकदम, दिस इज़ अ स्मॉल पार्ट एंड हम ऊटी सिटी से ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स दूर है। एकदम छोटी सिटी है ऊटी। हम अब आगे जाके और एक्सप्लोर करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड अप इन द व्लॉग। वो जो मैंने आपको व्यू दिखाया था वो हमारे मेन डोर से था, और ये जो व्यू है हमारी बैल्कनी से। सो यू कैन सी द हिल्स एंड वहाँ पे हाउसेज है बहुत सारे। काफ़ी प्रिटी है ऊटी कंपैरेटिवली टू अदर प्लेसेस आई हैव बीन। इट्स वेरी गुड। अबे सना के लिए ले ले, ये खाएंगी ये। आई थिंक इन लोग का इट्स लाइक अ स्मॉल डेस्टिनेशन फॉर शॉपिंग। मैंने अंजीर की हेल्प की। दिस इज़ अ टेलीस्कोप हाउस, बट आई थिंक इसके लिए बहुत वेटिंग है। सो लेट्स जस्ट गो टुवर्ड्स द पीक। ओके, सो आई कैन सी समथिंग रिटन ओवर देयर, व्यू पॉइंट आई थिंक, व्यू पीक। ओके, एंड दिस इज द पीक। What is it? View Karnataka border. Okay, I think this is this is from where we can view the Karnataka border. Okay, that's nice. And this is Ooty town. Okay, this is Ooty town. पता नहीं, सब confusing है बहुत। कहाँ से व्यू करना है, don't know. Right guys, this is the peak. And this is Ooty for you. Doddabetta Peak. And I have been pronouncing it wrong. मैं डोबाडेटा बोल रहा था, I don't know. Anyways. அது கூட கேட்க முடியாது. அது நாலு காட்டேஜ் நனைஞ்சிட்டாங்க, அப்படி நடந்து அப்ப நான் கேட்க सना के लिए सना सना टी फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री। ओके, सो ऊपर टी फैक्ट्री है एंड नीचे चॉकलेट फैक्ट्री है। सो वी विल गो टू द टी फैक्ट्री फर्स्ट एंड एक्सप्लोर व्हाट दे हैव टू ऑफर। तो ये है बेंचमार्क, दिस इज द टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री इन ऊटी। I think these are tea leaves, raw tea leaves. Please visit upstairs, straight to factory. हाँ, यहाँ से पत्ते ले रहा है, इट्स गेटिंग प्रोसेस्ड ओवर हियर एंड देन वहाँ से टी बन रहा है। ओके गाइस, बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग चॉकलेट फैक्ट्री जा नहीं पाए,
तो एक्चुअली क्या है, हमारी 12:15 की टॉय ट्रेन है फ्रॉम, कहाँ से था, हाँ, फ्रॉम ऊटी इटसेल्फ टू कन्नूर। तो उसके वजह से हम चॉकलेट फैक्ट्री नहीं जा पाए। सो नाउ वी हैव halted फॉर अ स्मॉल ब्रेक एंड विल बी गोइंग टू द टॉय ट्रेन नेक्स्ट डायरेक्टली। एंड वहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्टेंस है टू कन्नूर। उसके बाद में वी विल हैव लंच एंड उसके बाद में हमें 2 स्पॉट्स जाने हैं। एक ऊटी लेक जहाँ पे हम लोग बोटिंग करने वाले हैं, एंड उसके बाद में बोटानिकल गार्डन्स। सो गाइस, दिस इज़ द टॉय ट्रेन। हाँ, एंड वी हैव बुक द टिकट्स फॉर फर्स्ट क्लास, सो लेट्स गो ओवर देयर। निकल जाती है जवानी है। चिल्ला 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 चिल्ला। बाबा दो उसकी एक बार This is the rose garden. Okay, it starts from there. वहाँ पे you come down from there and it goes all the way till here and till there in the end. देखो बहुत कम रोजेस प्लांटेड है यहाँ पे, एंड एक्चुअली इतना मुझे वर्थ इट नहीं लगा ये। आई मीन बोटानिकल गार्डन इससे काफ़ी बेटर है, लाइक उस दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। ये मुझे थोड़ा एवरेज ही लगा बिकॉज बहुत कम रोजेस प्लांटेड है। सो या, बट ओके। बट स्ट्रेंज फैक्ट ये है कि ठंडी में रोजेस लाइक हाउ दे सर्वाइविंग इन द कोल्ड, बट ओके, उन्होंने कुछ तो किया है, आई डोंट नो हाउ। आई थिंक इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता रहेगा, दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्पॉट टू सी। बट रेस्ट assured I wouldn't recommend this spot to anyone. Okay, but they do have a view over here. Viewpoint is here. This might change my point of view. Pretty average you could say, because ये व्यू तो मुझे अपने होटल रूम से भी मिल रहा है, एंड 5-6 फूल देखने के लिए no, don't waste your time over here. But still, beauty is in the eye of the beholder. You guys can still come here if you want to. I didn't find it इतना worth. Okay, मुझे अब मालूम पड़ा ये जो रोज़ गार्डन है यहाँ से भी है, पूरा कवर्ड है, and it goes till here, so you can go from there. So wait, you can go from there. हाँ, क्या बोल रहे हो अम्मी, बोलो। और नीचे जाएंगे, और नीचे जा सकते हैं हम लोग इस पे। अच्छा, so you can go from there and then you can come all the way down from here and explore this part, then go down again and then explore the rest part. And roses come इसलिए because they are growing them right now, and by March April these roses will bloom out. Okay, I changed my words. This is actually good. You guys can come here, but I would recommend then coming in the season of March or April when the roses are blooming and when the flowers are full. अभी तो it's just like a dead land. See, कुछ एकदम खाली पड़ा है, कुछ नहीं दिख रहा है। Okay, so second last destination for today, boat house Ooty. यहाँ पे हम बोटिंग करने वाले हैं, but let's just figure out where we can get the tickets for the boating. All right, 1 second. Alright, वो बस एंट्री फीस थी. This is the amount we have to pay for taking a boat. कितने मिनट का तुमको चाहिए? 2-seater is 400 रुपया. हाँ, that we can do that ना. आधे घंटे का। Okay, so 400 रुपीज़ की बोट थी एंड उसमें 400 रुपीज़ का डिपॉजिट था. टोटल 800 रुपीज़. सो 400 रुपये विल गेट बैक वंस वी आर डन. अभी मुझे लाइफ जैकेट्स एंड ऑल पहनना है, तो मैं डायरेक्टली तुमको बोट के अंदर मिलता हूँ. हाँ, मैं भी बैठ गया, मेरा भी तो। Okay, so the last destination for today is Botanical Gardens. Actually, I'm very tired, so ज़्यादा देर तो नहीं रुकूंगा यहाँ पे. I will just finish this in 20-25 minutes and then head straight to the hotel and sleep. And ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ because I have to leave for Coorg in the morning. जल्दी निकलना है Coorg के लिए.
एंड रास्ते में मैसूर पैलेस भी कवर अप करना है. सो नाउ यू कैन एंजॉय द व्यू ऑफ दिस गार्डन. गुड मॉर्निंग गाइस. अब एक्चुअली हमें ब्रेकफास्ट करके कुर्ग के लिए निकलना है. होटल चेकआउट करना है. एंड ये मेरी बैग की नहीं खुल रही है. ये सेम की है जो जिससे मैंने ये लॉक किया था कल, और ये कल खुल भी रहा था, बट फॉर सम रीज़न अभी ये खुल नहीं रहा है. आई डोंट नो व्हाट टू डू.